Hello everyone. Today I'm going to discuss about the assessment and evaluation practices of the CBSE board for the session 2023 and 24. So recently CBSE has published one circular. This is the circular dated 6th April 2023. Subject is assessment and evaluation practices of the board for the session 2023-24. The question paper pattern is same, but they have changed the criteria for competency based questions. So it is clearly written that the National Education Policy 2020 has affirmed the need to move from rote learning to learning more focused on developing the creative and critical thinking. CCT हम बोलते हैं जिसको capacity of the students to meet the challenges of the 21st century proactively. Accordingly, the board has taken multiple steps towards implementation of competency focused education in schools, ranging from aligning assessment to competencies, developing of exemplar resources for teachers and students, as well as continuous capacity building of teachers. So there is a change in this year in 10th and 12th. So let us go through that changes. See, this is the pattern of 2022-23 जिसमें 40% जो competency based questions था वो अभी 50% हो गया competency based questions, right? तो यहाँ पे जो 20% MCQ रहेंगे और objective 20% था सेम है, और 40% जो क्वेश्चन थे वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे पहले, जो कि अब 30% हो गया, राइट? दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th. एंड फॉर 11th एंड 12th कॉम्पिटेंसी बेस्ड 30% क्वेश्चन थे, अभी वो 40% हो गया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20% सेम है, और 50% जो थे रिमेनिंग क्वेश्चंस वो शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जो कि अब 40% हो गया. सो अभी सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक रूमर, एक फेक न्यूज़ ये चल रहा है कि 50% MCQ हो गया. एक्चुअल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक मिसकंसेप्ट ये है कि वो सारे MCQ क्वेश्चंस हैं. सो आज मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे मैं फोकस कर रहा हूँ. सो लेट अस सी दैट what competency based education or which type of questions will come. So let us have a look. Right. So competency based education में it is an approach towards three components. One is teaching, learning and assessment. So one of the basic fundamentals of this approach known as CBE मतलब competency based education, known as CBE, is that it should be related to real world context, right? That is the main part. Real life situation based questions होते हैं, and should fully cover topics that are related to employment and daily life. It gives paramount importance to the students' progression through the curriculum at their own pace. And teaching and learning, a core principle of CBE is that it focuses on students centered learning, and it lays significance on the teaching, empowering the students to learn actively, supported by feedback. It is very similar to mastery based learning. So now we are moving toward the last component, assessment. Assessing the application of knowledge and skills to real world context and using authentic problems which draw on real life data are key features of CBE assessment systems. Now let us have a look on the advantages of this CBE. So first is CBE promotes high order thinking skills and facilitates multifaceted approaches as they are of vital importance in the real competitive world. And the second one, it enhances the social and emotional skills. It helps the students to be more competent universally, and it facilitates the students to master a skill at their own pace irrespective of the surrounding, right? And the Central Board of Secondary Education CBSE will assess the students of classes 9 to 12 on the basis of the application of concepts in real life or unfamiliar situations. CBSE's competency based education project is aimed at replacing the existing rote learning model with a competency based framework as mentioned in NEP 2020. So competency based questions are not just case study type questions as per popular misconceptions. So competency questions can be of any
typology, MCQ, very short answers, short answer, long answer, case based throughout the question paper. So now we are going to see types of competency based questions for classes 9 to 12th, not 9 to 10, 9 to 12th. So first type of question is analytical thinking based questions, which consist of table or data based questions. Date likha hua, this is data, right? The second one is conceptual clarity based questions, based on some concepts or figure based questions. And the third type of question is adaptive reasoning बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो लास्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं वो इस कैटेगरी में रहेंगे. एंड द लास्ट वन इज वैल्यूएटिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन, जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड के क्वेश्चंस रहते हैं और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे. सो मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ. सो फर्स्ट लेट अस टेक द analytical thinking based questions, that is table or data based questions. Okay, so this is one example. A tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps. A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. So this is the design, and what are the coordinates of the point on y axis equidistant from A and G. So this is one example. And the second data based questions जो मैंने बताया है, तो ये देख लीजिए आप, इसमें टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है. वी हैव टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. जो स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है क्लास 10th के वो भी इस कैटेगरी में आएंगे. So from the 2 polygons compare the performance of the 2 sections. So this is the first type of questions. Now we are moving toward conceptual clarity based questions or concept based questions or figure based questions. So जो quadratic equations के जो word problems हैं, linear equation के जो word problems हैं वो इसमें आएंगे. So this is one example. To fill a swimming pool 2 pipes are used. एक टैप वाला भी क्वेश्चन है हमारे quadratic equations में, तो वो भी इसमें आएंगे. ट्रेन वाला क्वेश्चन है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है. आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल. जो आपके जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. सो सी दिस एग्जांपल. मोना हैज़ अ मेटालिक हेमिस्फेरिकल बाउल that is made up of steel. The total sheet used in making the bowl is 2736 pi centimeter cube. In this bowl she can hold 1152 pi centimeter cube kheer. Find the thickness in centimeter cube of bowl. ये तो 9th का एग्जाम्पल है. सो क्लास 10th के बेसिस पे भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स शेप्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे टॉय वाला क्वेश्चन हो गया और टेंट वाला क्वेश्चन हो गया, दैट विल कम अंडर दिस वन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडेप्टिव रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. सो सारे केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे. सो दिस इज़ वन एग्जांपल केस स्टडी क्वेश्चन. सिमिलरली बहुत सारे जितने भी केस स्टडी क्वेश्चंस हैं 10th 9th 11th 12th के सारे इस कैटेगरी में आएंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट सेक्शन, evaluating skills based questions, that is assertion reasoning based questions और theorem based questions और some numericals. Okay, numerical मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि साइंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं. So एक एग्जांपल है this one. If the coordinates of the midpoint of the sides AB and AC of triangle, actually में ये triangle है, triangle, एक मिनट में इसको triangle लिख देता हूँ. Triangle ABC are D 35E -3 -3 respectively, then BC is equals to 20 units. Reason दिया हुआ है, the line joining the midpoints of 2 sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. So this type of question will come under this section. I will show you one more example. ये भी एक एग्जाम्पल है, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, क्लास 9th का. सो जितने भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे. सो ये सब मिला के 50% मार्क्स है. 50% मतलब 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि सोशल मीडिया में जो मतलब फेक न्यूज़ ये उड़ा रहे हैं कि 50% MCQ है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ऑलरेडी CBSE ने अपना नया सैम्पल पेपर दे दिया. अगर उसमें आप अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, सो दैट इज़ इक्वल टू 40 मार्क्स. एक मार्क इधर उधर हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 40 मार्क्स. राइट, आई थिंक आई मेड क्लियर द असेसमेंट criteria of and the question paper of this the present academic year, that is 2023-24. I wish you all the best. Thank you very much.